not a state, it is an act. And what he meant was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. To guard it and never take it for granted. And protecting our democracy takes struggle, it takes sacrifice, but there is joy in it, and there is progress, because we, the people, have the power to build a better future. And when our very democracy was on the ballot in this election, with the very soul of America at stake, and the world watching, you ushered in a new day for America. To our campaign staff and volunteers, this extraordinary team, thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. And for making this victory possible. To the poll workers and election officials across our country who have worked tirelessly to make sure every vote is counted, our nation owes you a debt of gratitude. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. And I know times have been challenging, especially the last several months. The grief, sorrow, and pain, the worries and the struggles. But we have also witnessed your courage, your resilience, and the generosity of your spirit. For 4 years, you marched and organized for equality and justice, for our lives and for our planet. And then you voted. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. You chose Joe Biden as the next president of the United States of America. And Joe is a healer, a uniter, a tested and steady hand, a person whose own experience of loss gives him a sense of purpose that will help us as a nation reclaim our own sense of purpose. And a man with a big heart who loves with abandon. It's his love for Jill, who will be an incredible First Lady. And Ella and my sister Maya and our whole family. I love y'all more than I can ever express. We are so grateful to Joe and Jill for welcoming our family into theirs on this incredible journey. And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, Black women, Asian,
white, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the Black women who are often, too often, overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th Amendment, 55 years ago with the Voting Rights Act, and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. Tonight, I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulders. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way. And to the American people, no matter who you voted for, I will strive to be a vice president, like Joe was to President Obama, loyal, honest, and prepared, waking up every day thinking of you and your family. Because now is when the real work begins, the hard work, the necessary work, the good work, the essential work to save lives and beat this epidemic, to rebuild our economy so it works for working people, to root out systemic racism in our justice system and society, to combat the climate crisis, to unite our country and heal the soul of our nation. And the road ahead will not be easy, but America is ready. And so are Joe and I. We have elected a president who represents the best in us, a leader the world will respect and our children will look up to, a commander-in-chief who will respect our troops and keep our country safe, and a president for all Americans. And it is now my great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden.
my fellow Americans, and the people who brought me the dance, Delawareans. I see my buddy Senator Tom Carper down there, and I think Senator Coons is there, and I think the governor's around. Is that Ruth Ann? And that former Governor Ruth Ann Minner. Most importantly, my sisters-in-law, my sister Valerie. Anyway. Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast for a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow, bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you've placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again, and to unite us here at home. It's the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for that vision. And now, the work of making that vision is real. It's a task, the task of our time. Folks, as I said many times before, I'm Jill's husband. And I would not be here without her love and tireless support of Jill and my son Hunter and Ashley, my daughter, and all our grandchildren and their spouses and all our family. They're my heart. Jill's a mom, a military mom, an educator. And she has dedicated her life to education. But teaching isn't just what she does, it's who she is. For American educators, this is a great day for y'all. You're going to have one of your own in the White House. And Jill's going to make a great First Lady. I'm so proud of her. And I'll have the honor of serving with the fantastic Vice President who you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. It's long overdue. And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. But once again, America's bent the arc of the moral universe more toward justice. Kamala, Doug, like it or not, your family, you become an honorary Biden, there's no way out. All those of you who volunteered and worked the polls in the middle of this pandemic, local elected officials, you deserve a special thanks from the entire nation. And to my campaign team and all the volunteers and all who gave so much of themselves to make this moment possible, I owe you. I owe you. I owe you everything.
and to all those who supported us. I'm proud of the campaign we built and ran. I'm proud of the coalition we put together, the broadest and most diverse coalition in history. Democrats, Republicans, independents, progressives, moderates, conservatives, young, old, urban, suburban, rural, gay, straight, transgender, white, Latino, Asian, Native American. I mean it, especially for those moments, and especially for those moments where this campaign was at its lowest ebb. The African-American community stood up again for me. You've always had my back, and I'll have yours. I said at the outset, I wanted to represent this campaign to represent and look like America. We've done that. Now that's what I want the administration to look like and act like. For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They're Americans. The Bible tells us, to everything there is a season, a time to build, a time to reap, and a time to sow, and a time to heal. This is the time to heal in America. Now this campaign is over. What is the will of the people? What is our mandate? I believe it's this. Americans have called upon us to marshal the forces of decency, the forces of fairness, to marshal the forces of science and the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care, the battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country, and the battle to save our planet by getting climate under control, the battle to restore decency, defend democracy, and give everybody in this country a fair shot. That's all they're asking for, a fair shot. Folks, our work begins with getting COVID under control. We cannot repair the economy, restore our vitality, or relish life's most precious moments, hugging our grandchildren, our children, our birthdays, weddings, graduations, all the moments that matter most to us, until we get it under control. On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021. That plan will be built on bedrock science. It will be constructed out of compassion, empathy, and concern. I will spare no effort, none, or any commitment to turn around this pandemic. Folks, I'm a proud Democrat, but I will govern as an American president. I'll work as hard for those who didn't vote for me as those who did. Let this grim era of demonization in America begin to end here and now. The refusal of Democrats and Republicans to cooperate with one another, it's not some mysterious force beyond our control. It's a decision, a choice we make. And if we can decide not to cooperate, then we can decide to cooperate. And I believe that this is part of the mandate given to us from the American people. They want us to cooperate in their interest. And that's the choice I'll make.
And I'll call on Congress, Democrats and Republicans alike, to make that choice with me. The American story is about slow yet steadily widening the opportunities in America. And make no mistake, too many dreams have been deferred for too long. We must make the promise of the country real for everybody, no matter their race, their ethnicity, their faith, their identity, or their disability. Folks, America has always been shaped by inflection points, by moments in time where we've made hard decisions about who we are and what we want to be. Lincoln in 1860, coming to save the Union. FDR in 1932, promising a beleaguered country a new deal. JFK in 1960, pledging a new frontier. And 12 years ago, when Barack Obama made history, he told us, yes, we can. Well, folks, we stand at an inflection point. We have an opportunity to defeat despair, to build a nation of prosperity and purpose. We can do it. I know we can. I've long talked about the battle for the soul of America. We must restore the soul of America. Our nation is shaped by the constant battle between our better angels and our darkest impulses. And what presidents say in this battle matters. It's time for our better angels to prevail. Tonight, the whole world is watching America. And I believe at our best, America is a beacon for the globe. We will lead not only by the example of our power, but by the power of our example. I've always believed, many of you heard me say it, I've always believed we can define America in one word: possibilities. That, in America, everyone should be given an opportunity to go as far as their dreams and God-given ability will take them. You see, I believe in the possibilities of this country. We're always looking ahead to an America that's freer and more just, ahead to an America that creates jobs with dignity and respect, ahead of America that cures diseases like cancer and Alzheimer's, ahead to an America that never leaves anyone behind, ahead of America that never gives up, never gives in. This is a great nation. It's always been a bad bet to bet against America. We're a good people. This is the United States of America, and there's never been anything we've been not able to do when we've done it together. Folks, in the last days of the campaign, I began thinking about a hymn that means a lot to me and my family, particularly my deceased son, Bo. It captures the faith that sustains me and which I believe sustains America. And I hope it can provide some comfort and solace the 230,000 Americans who've lost a loved one to this terrible virus this year. My heart goes out to each and every one of you. Hopefully this hymn gives you solace as well. And it goes like this: and he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, and make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand. And now together, on eagle's wings, we embark on the work that God and history have called upon us to do, with full hearts and steady hands, with faith in America and in each other, with love of country, a thirst for justice. Let us be the nation that we know we can be, a nation united, a nation strengthened, a nation healed. The United States of America, ladies and gentlemen, there's never been anything we've tried we've not been able to do. So remember, as our grandpapa used to say when I walked out of his home when I was a kid up in Scranton, he said, "Joey, keep the faith." And our grandmother, when she was alive, she yelled, "No, Joey."
रेगुलर ट्रेनिंग जदि करिवु तू ही चैंपियन हेबु से सब दिन रे ट्रेनिंग केमिति करिवि नुआ कंफी स्नग फिट सैनिटरी नैपकिन अन्य नैपकिन तुलना रे 80% अधिक शोषी थाए बड़ विंग्स लीकेज को रोकी थाए कंफी स्नग फिट द पावर टू बी यू मात्र 22 टंका रे सीमा तू प्लस 2 पर कोन करिवु बीएससी नर्सिंग और तू एमआरटी तू कोन करिवु बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिया तू बीएससी इन ईएमटी रोजी तू कौन पढ़िबू मु तो बीपीटी पढ़िबी अच्छा मैं कोठी पढ़िबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़िबा और सभी को स्वास्थ्य सेवा जोगाई दबा स्वप्न रे भाबिथिला शाहरुख हेले मिली गला प्रभु कौन हबो आगकू आसंता काली राति 9टा केवल जी सार्थक रे दादा दादी नाना नानी चाचा चाची मामा मामी मत हो परेशान मुबासन दर्द मिटाना और आसान दर्द मिटाना और आसान मुबासन दर्द मिटाना और आसान गोल्डन डायमंड्स नहीं आसी शगुन ऑफर प्रति 10 ग्राम सुना उपरे 3000 टंकार छाड़ हीरा गहना उपरे 25% पर्यंत छाड़ सुना गहनार मजूरी मात्र 8% रु आरंभ धनतेरस माने सेनको गोल्डन डायमंड्स एटा कोन एटा गुड नाइट गोल्ड फ्लैश मोड रे फ्लैश वेपर्स पुलिस परी कोन रे पसी लुचिथिबा डाकू मसा माननको खोजी धपक भारतर अति शक्तिशाली लिक्विड वेपराइजर गुड नाइट गोल्ड फ्लैश एही धनतेरस आउ दिवाली रे घर को आणंतु सुख और समृद्धि लालचंद ज्वेलर्स सहित आ पांतु स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी रो मेकिंग चार्जेस फ्लैट ₹375 पर ग्राम डिजाइनर गोल्ड ज्वेलरी रो मेकिंग चार्जेस फ्लैट ₹475 पर ग्राम एवं एंटिक एंड टेम्पल कलेक्शन गोल्ड ज्वेलरी रो मेकिंग चार्जेस फ्लैट ₹575 पर ग्राम ता सहित डायमंड ज्वेलरी उपरे पांतु फ्लैट 20% ऑफ सिल्वर ज्वेलरी रो मेकिंग चार्जेस उपरे फ्लैट 50% ऑफ सर्तावली लागू आपण को स्वागत लालचंद ज्वेलर्स रो ईस्टर्न इंडिया रो सबुठु बड़ शोरूम रघुनाथपुर मास्टर कैंटीन एवं कैंटोनमेंट रोड कटक सिग्नेचर फोन नंबर मो नंबर नहीं जाओ ठीक मां परी ओडिया मैट्रिमोनी भी मोर सिक्योरिटी रो पूरा ध्यान रखे मोर फोन नंबर बिना शेयर करी मते कॉल रिसीव करबा को दिए ओडिया मैट्रिमोनी कोन लागु छु किंतु बाळ खोली दे ना बेसी सुंदर देखा जीवु धळा बाळ लुचौछि खोले ताको मु बतौछि कलर जत्नो बाला कलर 10 गुण अधिक एलोवेरा रो जत्न नुवा गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम द्वारा एहार नो एमोनिया क्रीम दिए रिच कलर आ बाळ देखा जे सॉफ्ट आ शाइनियर ओहो गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम एही कलर रे अछि जत्न ये रणभूमि हार आउ जीत रो एठी निज सहित हुए मुकाबला निजर समय को ताल दे बाजी जीतबार इच्छा प्रतिबंधक करे मन को निराशा पुणी एक आशार आलोक मन को दिशे जीतबार लक्ष्य नहीं ज्वालामुखी से साजे मो सफलतार चाबिकाठी इग्मा गंठी बात तैल एबे समस्त जंत्रणारू मुक्ति एबे स्प्रे जेल एवं कैप्सूल रे उपलब्ध शॉप बेफिकर ऑन मिंत्रा पाइए स्पेशल ऑफर्स एंड फ्री शिपिंग ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर पे विथ कैश कार्ड और यूपीआई एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ट्राई इजी रिटर्न्स एक्सचेंज एंड कीप ओनली व्हाट यू ट्रूली लव मौसा कामुळुचंती धूपकाठी जळै दबा की नहीं एगुड़ा का हानिकारक एथिरे एमिति सब विषाक्त कीटनाशक अछंती जहा जोगो त्वचा एवं श्वासर बीमारी हे पारिबो एगुड़ा को सरकार को बिना अनुमति रे तयारी हेउछि हमकु त केबे किछि नै हबार अपेक्षा करंतु नहीं केवल जणाशुना कंपनी रो प्राकृतिक धूपकाठी जळांतु जहा मशा मानकर शत्रु हेइथिबो स्वास्थ्य रे नुहे निमो एवं हळदीर शक्ति बड़ गुड नाइट निमो धूपकाठी 3 घंटा पर्यंत जळे आपनकु मशा न मिले वाह मात्र 15 टंका जय जय बापा गुड नाइट निमो धूपकाठी
विरति पर स्वागत। दिनक तले विश्वर प्रथम जनजाति विश्वविद्यालय केस परिदर्शन करथिले बॉलीवुड अभिनेता विश्वजित प्रधान और तांका पत्नी सोनालिका प्रधान। केस बुली देखिबा परे सेमाने बहुत खुशी होई जाइथिले। केस रे 30,000 आदिवासी पिलांको मागणा खाइबा देबाठु आरंभ करी पिलामानकर पाठ पढ़ा एवं जनजाति पिलांक भविष्यत जो भली उत्तम भावे गढ़ा जाउछि यह निश्चित महान कार्य बोली कहिथिले। बॉलीवुड अभिनेता विश्वजित प्रधान एवं तांका पत्नी सोनालिका प्रधान किट और केस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंतंकर भूयसी प्रशंसा करथिले। ओडिशा खूब सुंदर स्थान और ओडिशार लोक माने बहुत सरल बोली से माने कहिथिले। ओडिशा को प्रथम थर आसी से बहुत खुशी अछंते। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का कार्यशैली और लोकप्रियता को नहीं मध्य प्रशंसा करथिले। ए अवसर में किट और केस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत बॉलीवुड अभिनेता विश्वजित प्रधान एवं तांकर पत्नी सोनालिका प्रधान को संबर्धित करथिले। प्रथमे फौजी सीरियल रे बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का सहित क्यारियर आरंभ करथिले विश्वजित प्रधान। तापरे से आउ केबे पछकू फेरी चाहि नाहंती। निज बलिष्ठ अभिनय रे से प्रशंसकंक मध्यरे स्वतंत्र स्थान सृष्टि करि पारिछन्ते। केस परिदर्शन अवसर रे तांक सहित साक्षात करथिले कलिंग टीवी प्रतिनिधि अरुंधति मल्लिक। आम सहित अच्छा बॉलीवुड जनाशुना अभिनेता विश्वजित प्रधान आम कथा से किस को आसछंती विश्वर प्रथम जनजाति विश्वविद्यालय किस रे से अच्छा किस परिसर से बोली आसम आम कथा सर पहले कलिंगा टीवी आपका स्वागत है। वेलकम टू ओडिशा। क्या कहना चाहेंगे, पहली बार आए हैं ओडिशा के बारे में कुछ बताएं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। इट्स वंडरफुल। आई मीन it's the first time I have come to Bhubaneswar and Odisha, though Odisha has been part of the mind and system since childhood. बचपन से यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की टेम्पल्स, यहाँ का समंदर, टूरिज्म वगैरह सभी के बारे में खूबसूरत। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट। यहाँ के ट्राइबल्स सबके बारे में पढ़ते सुनते देखते आए हैं, बट हाँ अपनी आँखों से देखने का दिस इज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। इट्स वंडरफुल। फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड किस, तो क्या जो किस में आप आए हैं यहाँ पे 30,000 स्टूडेंट ट्राइबल स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, खाना उनका खाना पीना रहना सब कुछ हमें फ्री में होता है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। मतलब ये देख के तो व्हाट डॉक्टर अच्युत सामंत हैज़ अचीव्ड हियर, इट्स सच अ गुड एग्जांपल फॉर आई थिंक ऑल द एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑल द पॉलिटिशियंस, everybody who is doing something in the country to learn and see कि भाई अगर कोई करना चाहे, if the right intention is there, तो it is possible. We are a huge country. जो भी एक ट्रेजेडी रही हमारे पिछले इतिहास की, के बाहर से लोग आए लूट के चले गए। हम एक बार किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को, बट Mughals came, Britishers came, and they all took away the riches. So आजकल हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में नहीं जाने जाते, लेकिन ये एक जो दुनिया एक क्रिएट की है डॉक्टर अच्युत सामंत ने, इट इज़ सच अ गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज़ पॉसिबल अगर कोई करना चाहे। दिल, इफ़ यू हैव योर हार्ट इन द राइट प्लेस, पॉसिबल है। और मतलब अब मैं पूरा कैंपस भी देखा, जो वो बच्चों के फोटोग्राफ्स देख के, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी साइज़ के बच्चे हैं। उन बच्चों को तो वर्ल्ड भी आप जानते हैं उनके कामों के लिए, उनके स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा यहाँ पे बनाते हैं जो किसमें जो, क्योंकि बचपन से जो कहते हैं ना केजी से पीजी तक जो एक पावर्टी है, मतलब एक डायरेक्शन नहीं है। वही जो जहाँ सर्वाइवल के लिए परिवार स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ एजुकेशन या करियर तो बहुत दूर की बात होती है। ऑन अ डेली बेसिस यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर योर सर्वाइवल। तो ऐसे में एक अगली जनरेशन को एक ये डायरेक्शन देना, ऑप्शन देना कि भाई बच्चा आपका पढ़ सकता है, ये फ्यूचर है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जैसे मैंने देखा जो वर्क ओरिएंटेड पढ़ाई, ये नहीं कि सिर्फ डिग्री हासिल आपने कर ली और फिर आप डिग्री को लेके कंफ्यूज्ड बैठे हो कि अब मैं क्या करूं। जो हमारे देश में एक मेजर प्रॉब्लम है कि वी हैव over-educated people with lots of degrees, but they don't know what to do with that. तो यहाँ पर जो एक
कि काम क्या करोगे आप, यू नो, वर्क ओरिएंटेड के ऑल राइट, यू नो, एक्चुअली आप जो इतने बढ़िया बढ़िया वो प्रोडक्ट्स बना के बच्चों ने रखे हुए हैं कि हाउ विल यू अर्न, हाउ विल योर एजुकेशन हेल्प यू बी यूजफुल इन योर लाइफ. सो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो वेस्ट नहीं जा रही है, वो इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर एबिलिटी टू अर्न इन द फ्यूचर. वो बहुत अच्छी बात है. तो भाई आप देखिए डॉक्टर साहब ने यहाँ क्या अचीव किया है. तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं. आप अच्छी चीज़ लेके अच्छा भी बना सकते हैं, उसी चीज़ को लेके आप ख़राब भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ वंडरफुल. और आई होप ही जो उनका प्लान है आगे करने का, ही अचीव्स ऑल दैट, एंड आई होप ही डज समथिंग ऑन द नेशनल लेवल ऑल्सो, क्योंकि ऐसे लोगों को वी नीड देयर विजन, देयर एबिलिटी टू डू थिंग्स ऑन अ लार्जर स्केल, के और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले. सिर्फ उड़ीसा तक वो लिमिट ना हो उनकी जो अच्छाई है, पूरे देश में फैले, पूरे देश को बेनिफिट हो. उड़ीसा में आपके भी बहुत फैन है यहाँ पे. कुछ दिन पहले OTT प्लेटफॉर्म में आया था आर्या, जो कि बहुत अप्रिशिएशन मिला था. उसके बारे में क्या बोले. आज जो पैंडेमिक सिचुएशन है, उस हॉल भी सारे क्लोज्ड है बहुत सारे स्टेट में. जैसे उस टाइम पे OTT प्लेटफॉर्म और आर्या की वो बहुत अप्रिशिएशन मिला था. एक वुमेन ओरिएंटेड जो वेब सीरीज था, उसके बारे में क्या बोले. OTT हैज़ गिवन एन ऑल्टरनेटिव आउटलेट, क्योंकि थिएटर बंद है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, और अभी भी पता नहीं कब एक्चुअली शुरू हो पाएंगे जब तक वैक्सीन नहीं आती है. तो वर्ल्ड ओवर, और मैं तो कहूँगा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो पूरी दुनिया में भाई डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत काम किया. उनको श्रेय भी मिला दैट ओके दे हैव डन वंडरफुल वर्क, हेल्थ वर्कर्स ने. लेकिन कोई भी एक्टर्स की, एंटरटेनर्स की बात नहीं करता कि जब लॉकडाउन में 24 घंटे आदमी घर में बंद है, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माँ बाप, when they are living together in a closed space for a long time, it's the entertainers who kept them sane. कि वो फिल्में आ रही हैं, टेलीविज़न सीरीज़ आ रही हैं, या स्पोर्ट्स, चलिए वो तो एक अलग कैटेगरी होगी, स्पोर्ट्स इवेंट्स भी बंद थे, पर एंटरटेनर्स प्लेड सच अ गुड रोल, सच अ बिग रोल इन कीपिंग द पीपल they helped them in making the lockdown more livable, more bearable. तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स, नर्सेज, सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सब के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एंटरटेनर्स जो दुनिया के हैं, उनको भी वी शुड थैंक देम कि, और वो सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म्स. तो थिएटर्स बंद हैं, सब बंद हैं, लेकिन लोग देख रहे थे, नए नए प्रोग्राम्स बन रहे थे. जून एंड में द टेलीविजन सीरियल प्रोड्यूसर्स दे स्टार्टेड शूटिंग. जैसे आर्या है, आर्या यस इट्स अ कमबैक vehicle for Sushmita Sen also. It was appreciated, and it was a clean serial, clean web series. Right. आजकल जो हम देखते हैं कि वो पॉपुलैरिटी के नाम पे और टू गेट द आई बॉल्स लोग गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ या नंगापन, और चूँकि सेंसरशिप की उतनी वो महत्ता नहीं है, उस पर वो ज़्यादा सेंसरशिप नहीं है, तो डेस्परेशन लेवल्स इतने हो गए हैं कि लोग इस तरह के प्रोग्राम्स बना रहे हैं वे इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द फैमिली टू सिट टुगेदर एंड वॉच इट. तो ऐसे में अगर साफ़ सुथरे प्रोग्राम्स आते हैं जैसे आर्या है, वे द होल फैमिली कैन सिट टुगेदर एंड वॉच इट एंड एन्जॉय इट, वो काबिल तारीफ़ बात है. या जैसे आर्या आया, या एक और फिल्म मैंने की थी क्लास ऑफ 83 जिसमें बॉबी देओल वॉज द लीडिंग मैन, प्रोड्यूस बाय शाहरुख खान. सो वो भी इट वाज अ क्लीन फिल्म. तो उसमें पॉसिबल है कि जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पर भाई इतना कुछ कर रहे हैं सफाई के साथ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हर काम में करप्शन ही हो. देश में जो पूरे में करप्शन फैला हुआ है कि नहीं, सफाई के साथ विद अ प्रॉपर सिस्टम थिंग्स कैन बी डन विच ही हैज़ शोन. सिमिलरली गुड प्रोग्राम्स can be produced, entertaining programs can be produced without resorting to unnecessary nudity or gali galonch या वो सब जो है. So Arya falls into that category, and now we are getting ready for season 2. We will start shooting I think in early next year, February. So yeah, thank you. और राधे भी आ रहे हैं सलमान खान की स्क्रीन में, आप लोग साथ में स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़े से. राधे इट्स अ सलमान खान फिल्म, तो
वो जैसे हमें पता होता है कि मर्सिडीज कार है तो कैसी होगी या नाइकी का जूता है तो कैसा होगा, तो वो एक सलमान खान बहुत बड़े ब्रांड हैं अपने आप में, तो भी जो उनके फैंस हैं दे ऑलरेडी नो कि अच्छा सलमान खान फिल्म है तो उसमें क्या कहा, तो इट्स आउट एंड आउट एंटरटेनर। सब बढ़िया, उन्होंने एक मज़ेदार फिल्म बनाई है, उसमें बढ़िया एक्शन है। दे हैव टेकन अ कोरियन एक्शन डायरेक्टर हैं उसमें, तो एक अलग तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। प्लस सलमान खान फिल्म इज़ अ सलमान खान फिल्म, मैं उसमें एक बड़ी फिल्म का छोटा सा हिस्सा हूँ। सो या बट इट्स ऑलवेज फन बी वर्किंग विद सलमान खान, और एक चीज़ें बड़े स्केल पे होती हैं तो larger than life, so it's a different world which he creates. ओडिशा रे हमारे जो सीएम है चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उनका जो 5T का जो काम कर रहे हैं, तो क्या उनके बारे में बताएंगे? I would prefer Mr. Patnaik to play a role at a national level. मुझे यही लगता है कि इतना अच्छा लीडर अगर हमारे पास है तो उसका बेनिफिट सिर्फ आई एम श्योर कि उड़ीसा को भी मिलना चाहिए, मिल रहा है, बट मे बी ऑल ऑफ इंडिया शुड बेनिफिट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, फ्रॉम हिज विजन. सो आई होप ही प्लेज अ bigger role at the national level, and it's wonderful. अब जैसे हम लिंगराज टेम्पल गए कल देखने, तो मुझे बताया कि वो सब वहाँ पर इलीगल स्ट्रक्चर्स बन गए थे, तो जो हमारी जो धरोहर है, जो हमारा कल्चर है, जो या मंदिर है फॉर एग्जांपल, वो सब छिप गया है लीगल स्ट्रक्चर्स के पीछे. तो जो वो एक सफाई करा रहे हैं कि ओके ये द फोकस इज़ ऑन द टेम्पल, तो जो हमारा कल्चर है देन फोकस ऑन दैट, तो उन्होंने पूरे इलीगल स्ट्रक्चर्स हटवाए वहाँ से. एंड आई बिलीव कि लोगों ने खुशी वो किया भी है कि ओके आवर लीडर वांट्स इट दैट वे, वी विल डू इट दैट वे. तो वो दैट लव ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द लीडर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो कहीं भी आप जाइए लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि वो द लीडर इज सेइंग डू इट दिस वे एंड दे वांट टू डू इट दैट वे. सो दैट वो जो एक समन्वय है लोगों के बीच में, सरकार के बीच में, एक आपसी प्यार, विश्वास, एंड दैट कैन ओनली हैपन थ्रू ईयर्स ऑफ वर्किंग टुगेदर. द फेथ दैट डेवलप्स कि हाँ जो ये हो रहा है सही हो रहा है. क्योंकि लोग भी इतनी बार धोखा खा चुके होते हैं ना, बिकॉज पॉलिटिशियन इज़ अ वेरी यूनिक एनिमल द वर्ल्ड ओवर. वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, निकलता कुछ और है. So ऐसे में if we come across an honest person who delivers what he promises, so that's a very fortunate sign for the people. से बॉलीवुड एक्टर विश्वजित प्रधान जहाँ आम कथा होते से ओडिशा आसछंती ओडिशा आसवा पर से किस्र परिसर बुली किस्रे जो 30,000 जनजाति पिला माने अछंती ताका विषय जानी प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत विषय बहुत बृहत प्रशंसा करते. भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीप्ति सहित अरुंधति मल्लिक रिपोर्ट, कलिंग टीवी. कलिंग सुप्रभात रे समय इच्छा एक विरतिर. प्रस्तुत हैला ड्यूरासेल छोटो पावर आपण को रिमोट पाई उपयुक्त. ये दिए 1 वर्षर दमदार पावर मात्र 18 टंका रे प्रति सेल. घरे हेउवा मिलीमिशी आमे वर्ष सारा पालिबा खुशी रो उत्सव. ड्यूरासेल छोटो पावर. सिग्नेचर फोन नंबर मो नंबर नहीं जाओ. ठीक मां परी ओडिया मैट्रिमोनी भी मोर सिक्योरिटी रो पूरा ध्यान रखे. मोर फोन नंबर बिना शेयर करी मते कॉल रिसीव करबा को दिए. ओडिया मैट्रिमोनी. गृहिणी का पसंद भारत मसाला से पुराना शिलबटा मसाला रो मजा नियंतु जहाँ क्रायोजेनिक स्पाइसेस ग्राइंडिंग प्लांट भारत मसला रे -96 डिग्री सेल्सियस रे प्रस्तुत हुए. भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया. जदि आपणकर कुकर किचन रो एमिति अवस्था करूची तेबे बदलाइबा जरूरी अटे. प्रस्तुत करूछु प्रेस्टीज स्वच्छ प्रेशर कुकर. एहा स्पिलेज कंट्रोल करे, सबुठारु जल्दी रोसेई करे, सबुठारु अधिक एनर्जी संचय करे. एहर मजबूत बेस वर्ष वर्ष धरी चली थाए. आउ एहा गैस और इंडक्शन उभय रे चले. सुविधा को जीए भला पांती प्रेस्टीज को अस्वीकार करिवे केमिति. आसी गला एनआरआई बरो एनआरआई बारा हवा तो शाहरुख परी जे मते कहबो कुकु 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 आई लव यू. बाबू डर मरा तुमको. स्वप्न रे भाबिथिला शाहरुख हेले मिली गला प्रभु. कौन हबो आगकु आसंता काली राति 9 केवल जी सार्थक रे. स्ट्रेच मार्क्स आजिकली बहुत कॉमन. शरीर रो विभिन्न प्रकार जगारु केवल 3 मास रे कमे दिए. डेल स्ट्रेच एंटी स्कार जेल एबे दाग को करंतु डिलीट. कल्याण प्रस्तुत करूची
4 लेवल एश्योरेंस सर्टिफिकेट कल्याण रु किनिथिबा गहना केबे जदी एक्सचेंज करबा को पड़े तो तारो हिसाब बिकिबा को पड़े तो तारो हिसाब किनिला बेले ही आपन को मिली जबो इंडिया रे प्रथम थर कल्याण ज्वेलर्स रो 4 लेवल एश्योरेंस सर्टिफिकेट। ब्रेक पर स्वागत। आज मालकानगिरी जिला गस्तरे जाउछंती पुलिस डीजी अभय माओवादी गड़ कहुवा स्वाभिमान अंचल गस्त करेंगे। गुरा सेतुरे बीएसएफ कैंप परिदर्शन कर कार्यक्रम रही। जिले में माओवादी गतिविधि और सुरक्षा व्यवस्थार समीक्षा करेंगे पुलिस डीजी। जिले में बीएसएफ एसओजी और डीवीएफ किभली समन्वय रखी माओ दमन अभियान को त्वरान्वित करेंगे से नहीं आलोचना करेंगे। सीमांत आंध्र सह मिलित ऑपरेशन करिबो ओडिशा पुलिस। लाल बाहिनी को मूलोत्पाटन करने को स्वतंत्र ब्लू प्रिंट प्रस्तुत होइछि। स्वाभिमान अंचल गुरा सेतुरे कंपनी ऑपरेटिंग बेस बा सीओबी प्रतिष्ठा करा जाउछि। गुरा सेतु समेत पणस्पुट अंचल को गड़ भाव व्यवहार करथिले लाल बाहिनी। पूर्व स्वाभिमान अंचल जोड़ाम्ब को आसीथिले पुलिस डीजी। अधिक सूचना आम सहित पोलाइन रे अछंती आम मालकानगिरी रिपोर्टर प्रसाद नायक आम सहित जोड़ी होछंती। प्रसाद, पुलिस डीजी अभय आज मालकानगिरी गस्तरे जाउछंती, केतेबेले पहुंचीबे एवं केउ सब कार्य करिवार कार्यक्रम रहिछि? निश्चित देखंतु दीप्ति जवली भाव में माओवादी गड़ बा राजधानी कहुची स्वाभिमान अंचल आज गोरा सेतु पुलिस डीजीपी जाकि अभय पहुंचवार रही कार्यक्रम आ संपूर्ण भाव में गुप्त रखा कौन समय निर्धारण करा जेहेतु ये माओप्रवण अंचल सुरक्षा दृष्टि संपूर्ण भाव में गुप्त रखा कार्यक्रम को तथापि जवली भाव में 10 ରୁ 11 मध्य पहुंचार कार्यक्रम जहाँ आम सूचना रही पहुंचा पर बीएसएफ एसओजी डीबीएफ जो रही सुरक्षा जवान माने मिलित भाव में किभली ऑपरेशन करा माओ दमन पाई जो माओवादी गतिविधि किभली भाव में देखा से तीक्ष्ण नजर रखा एक बड़ धरण ऑपरेशन जो रही ब्लू प्रिंट ताको प्रस्तुत करा कार्यक्रम रही। अन्यपटे रही सीमांत जो रही आंध्र गृह जवान माने रही सहित किभली भाव में समन्वय रखी ऑपरेशन जोरदार करा जो रही पणस्पुट अंड्रापाली आ जंत्री पंचायत एवं सी दुईटी पंचायत माओवादी कब्जा रही से किभली भाव में लोकों माओवादी ठारू से मुक्त करा से अंचल किभली भाव में माओ दमन करा विभिन्न प्रकार रणनीति आपणेवा जहाँ रही निहाती भाव में कहवा डीजीपी जो रही द्वितीय गस्त प्रथम रही जोड़ाम्ब तापर रही गोरा सेतु एवं निहाती भाव में एक बड़ धरण माओ दमन रणनीति कर संभावना रही जो रणनीति रही निहाती भाव में माओ दमन रे सहायक हम। निहाती भाव में प्रसाद, माओवादी को मूलोत्पाटन करने एकमात्र लक्ष्य रही डीजीपी आगरू भी एपरी कार्य आग को बढ़ाई नजर भी रही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद। आम मालकानगिरी रिपोर्टर प्रसाद नायक सविशेष सूचना दौले। समय सरी कलिंग सुप्रभात को ये रखुचु किंतु आपण खबर अपडेट पाई आम सोशल मीडिया साइट www.kalingatv.com को जाई देखि परिबे एवं कलिंग टीवी रा ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक सह आपण अपडेट रहंतु। नमस्कार। एही कार्यक्रम प्रस्तुत करुछंती BSNL Connecting India Faster। सह प्रायोजक डेल स्ट्रेच एंटी स्कार जेल एबे दाग को करंतु डिलीट। अमूल द वॉइस ऑफ इंडिया। रजिस्टर करंतु निजे अनुभव करंतु ओडिया मैट्रिमनी। बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस पात्रा इलेक्ट्रॉनिक्स। धनतेरस माने सिमको गोल्डन डायमंड्स। राज्य